जी, अस्सलाम वालेकुम everyone. Welcome back to another episode of Founder Stories. मैं आपकी host सबा सईद and today we have with us Mr. Ali Zeeshan Khan, the founder of DigiTrends. अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है आपका? Walaikum Assalam, Sabah. How are you? Alhamdulillah, ठीक ठाक. So let's begin by talking a little bit about your background. First of all, आपने कहाँ से education हासिल की? उसके बाद के experiences कैसे रहे? So I did my initial studies back in Pakistan. After doing my matriculation, I took admission in diploma in arts and graphics from North City School of Arts. I finished my diploma. I started working during my job. और उसके बाद जो हूँ मैंने अपनी कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग के अंदर जो है एडमिशन लिया फ्रॉम पिमसेड. आई डिड माय कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग and then uske baad jo hai I left Pakistan back in 2008, the beginning of 2008, and to pursue my further studies from Dublin, Ireland. So I took the admission in DMI, Digital Marketing Institute, to do my postgraduate diploma, and then I did my MBA from London School of Business and Finance. So that's my educational background. Right, that's great. So मुझे ये बताएं कि आपकी क्या motivation थी इस business को शुरू करने के लिए? What were the motivating factors behind it? Actually, the thing is that I was working in a multinational during that time. Informa is one of the leading Fortune 500 company and world's biggest event management and exhibition management company, based in UK, and उनकी जो है multiple like 40 countries के अंदर उनकी existence है. तो I was a director of marketing over there, fortunately, and alhamdulillah. तो वहाँ पे I was managing Arab Health as one of the leading healthcare exhibition. तो वहाँ पे मुझे एक idea आया कि why don't we start digital health business, and that is one of the reason that I have started a company. और उसके अलावा जो है during that particular time the digital boom was there. तो हमने मैंने एक अपना एक छोटा सा और एक स्टार्टअप किया था जिसका नाम था प्रिंट ऑनलाइन. प्रिंट ऑनलाइन के अंदर फॉर्चुनेटली लाइक वी स्टार्टेड लाइक फ्रॉम $500 हमने बिजनेस स्टार्ट किया था, मैंने और मेरा पार्टनर, ही इज यूके नेशनल. सो हमने बिजनेस स्टार्ट किया तो मुझे वहाँ से एक इंस्पिरेशन आई थी कि व्हाई डोंट वी स्टार्ट द एप्लीकेशन डेवलपमेंट बिजनेस. देन आफ्टर लाइक 6 or 7 years I started this business because I found a co-founder, and then we started working globally. Alhamdulillah, fortunately, we are a $1 million company at the moment. माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, that's amazing. So मुझे ये बताएं कि जैसे of course एक जब आप बिजनेस शुरू करते हैं तो कुछ challenges भी face करता है हर कोई. तो आपने ऐसे कुछ challenges face किए हो और फिर उस तरीके से उनको कैसे overcome किया आपने? देखिए challenges whenever we start, देखिए सर्विस बिजनेस में होता ये है कि जब भी आप सर्विस बिजनेस स्टार्ट करते हो उसमें सबसे बड़ा चैलेंज ये होता है is a lead generation और डिमांड जनरेशन. कि आपकी जो प्रोडक्ट है whichever you are making or whichever the product you are dealing with, you have faced lot of demand generation issues. आपको जो है एक नए ब्रांड को एक established मार्केट में लेके जाना है और established मार्केट के अंदर उसकी डिमांड जनरेशन करनी. तो that was the challenge. बट मेरा जो बैकग्राउंड था, और because I came from a strategic and a planning background, जहाँ पे मैं strategy और planning को डील कर रहा था पिछले 15 साल से मैं यही कर रहा हूँ. तो हमने उसको प्रॉपरली अलाइन किया और हमने यूएस मार्केट के अंदर पेनिट्रेट किया. यूएस के साथ हमारा जो मेरा जो मकसद था कि हम एक ग्लोबल कंपनी बनाना चाह रहे थे. दैट्स व्हाई आवर कंपनीज नेम इज DigiTrends ग्लोबल. तो जब हमने इसको DigiTrends ग्लोबल की हमने बुनियाद रखी, तो हम पहले यूएस से स्टार्ट करना चाहते थे. हमने यूएसए में स्टार्ट किया जहाँ पे मैं एट द मोमेंट अभी हूँ. उसके बाद जो है हमने उसकी स्ट्रेटेजी को इस तरह से अलाइन किया कि हमने एफिलिएट मार्केटिंग को और दूसरी चीज़ों को जब कंबाइन किया तो हमें काफ़ी चैलेंजेस इस तरह से आ रहे थे कि हम एक पाकिस्तानी कंपनी के अंदर पाकिस्तान में रहते हुए, बैक ऑफिस पाकिस्तान में बनाते रहते हुए, हमें दूसरी कंट्रीज के साथ जो है बिजनेस लेके आना था. तो वहाँ पे हमारी फिजिकल अपीयरेंस तो थी नहीं. तो हमने फिर एक जैसे हम कहते हैं कि जो ना एफिलिएट मार्केटिंग का सिचुएशन हमने शुरू किया, और फॉर्चुनेटली इट वर्क्स, एंड नाउ वी हैव द ऑर्डर्स फ्रॉम अक्रॉस द ग्लोब. अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास एस्टोनिया से लेकर, साइप्रस से लेकर, यूके से लेकर, सऊदी अरब, ओमान, एंड एवरीवेयर वी आर गेटिंग द ऑर्डर्स. बिल्कुल, दैट्स ग्रेट, माशाल्लाह. सो अच्छा, थोड़ा बहुत ना हमारी ऑडियंस के लिए अपने बिजनेस आइडिया के बारे में कुछ बताएं, इलैबोरेट करके थोड़ा सा कि एग्जैक्टली व्हाट डज अ डे लुक लाइक एट योर वर्क प्लेस. सी बिजनेस आइडिया हमारे पास दो मॉडल्स है. एक तो मॉडल ये है कि हम हेल्थ केयर एप्लीकेशंस के ऊपर काम कर रहे हैं, ठीक है ना. हम एक ऐसी 3-4 हमारे पास हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स हैं जो कि हम फार्मास्यूटिकल सेगमेंट के अंदर हम हमारी प्रोडक्ट जो है यूटिलाइजेशन हो रही है. दूसरा हमारे पास
एक सेगमेंट जो है प्रैक्टिशनर्स का जो सेगमेंट है वहाँ पे यूटिलाइजेशन हो रही है, इंश्योरेंस सेगमेंट के अंदर हम वो हमारे जो हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स है वो दे रहे हैं। उसके अलावा जो हमारा जो सेकंड कोर बिजनेस है दैट इज अ कस्टम डेवलपमेंट। तो हमारा जो इंटरप्राइज और कॉर्पोरेट के साथ काम करना बहुत आसान होता है, ठीक है ना, क्योंकि उनके पास एक सेट बिजनेस मॉडल्स होते हैं, उनके पास सेट स्कीमा और पूरा इकोसिस्टम तैयार होता है। तो वो हमारे पास हमारा जो ऑलमोस्ट 40% टू 45% जो क्लाइंटेल है वो कॉर्पोरेट है। लाइक अगर आप देखें तो पेनिट्रेशन विद इन द पाकिस्तानी मार्केट अल्हम्दुलिल्लाह लाइक ऑलमोस्ट, अगर मैं ज्यादा एग्जैक्ट नहीं कर रहा हूँ तो लाइक 60% फार्मास्यूटिकल्स के साथ हम काम कर रहे हैं ऑलरेडी, ठीक है राइट। ना, उनकी एप्लीकेशंस के अंदर, उनके उनके डिजिटल प्रोडक्ट्स के अंदर। लेकिन जो मेरा जो कोर मॉडल है दैट इज व्हाई वी आर इंटरेक्टिंग इज वन ऑफ द टू सपोर्ट द स्टार्टअप्स। तो डिजिट्रेंड्स के अंदर हम क्या करते हैं, हम स्टार्टअप्स को सपोर्ट करते हैं। अभी हमारा जो हम पाकिस्तान के अंदर इतने सारे स्टार्टअप्स में काम कर रहे हैं, हम 2 या 3 बिग यूनिकॉर्न्स स्टार्टअप से काम कर रहे हैं, जिसके अंदर वन ऑफ द स्टार्टअप इज कमिंग विद द नेम ऑफ रफ्तार, जिसमें बर्क की जो है पीछे से बैकिंग है। हम जो है इनको कंप्लीट स्टार्टअप इकोसिस्टम प्रोवाइड करते हैं। वी आर नॉट ओनली द प्रोडक्ट डेवलप, वी आर नॉट द सॉफ्टवेयर हाउस, बट वी आर द डिजिटल प्रोडक्ट डेवलपमेंट कंपनी, जिसके अंदर जो है हम जितने स्टार्टअप्स है, द न्यू एंटरप्रेन्योर्स है, वी गाइड देम हाउ टू डू द फंड रेजिंग। उसके अलावा जो है उनके प्रोडक्ट डेवलपमेंट, उनके एमवीपी डेवलपमेंट से लेकर उनकी पोस्ट डेवलपमेंट मार्केटिंग तक हम उनको हेल्प आउट करते हैं। और जो हमारा डे टू डे अगर आप देखें, हमारा जो बिजनेस मॉडल है वो इस तरह से है कि वी डू हैव डिफरेंट डिपार्टमेंट्स ऑल टुगेदर। हमारे पास अकाउंट मैनेजमेंट का पूरा एक सिस्टम डिपार्टमेंट है जो कि हमारे जो है क्लाइंट से इंटरेक्ट करता है ऑन डे टू डे बेसिस। के अलावा हमारा प्रोडक्ट स्ट्रेटेजी इज वन ऑफ द लीडिंग डिपार्टमेंट, जिसको हम कहते हैं कि हमारा फोटे है। प्रोडक्ट स्ट्रेटेजी डिपार्टमेंट के अंदर हमारे स्ट्रेटेजिस्ट हमारे पास हैं, जिनके टन्स ऑफ द एक्सपीरियंसेस हैं, उन्होंने मल्टीपल स्टार्टअप्स अक्रॉस द ग्लोब जो है उनके साथ काम किया हुआ है। तो हम ये चाहते हैं कि जितने पाकिस्तानी स्टार्टअप इकोसिस्टम है उनको जो है हम हेल्प आउट करें अपने एक्सपीरियंसेस के साथ और अपने ग्लोबल एक्सपीरियंसेस के साथ। तो this is how we operating, and this is how we really wanted the startups to come, and we are really here to help them out. All right, great. So before we move on to the next question, let's take a short break. जी, वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक एंड वी आर इन कन्वर्सेशन विद मिस्टर अली ज़ीशान खान। तो सर मैं नेक्स्ट सवाल आपसे ये पूछना चाहूँगी कि आप टीम बिल्डिंग प्रोसेसेस के हवाले से हमें कुछ बताएं कि टीम को मोटिवेटेड कैसे रखते हैं आप? देखिए टीम को मोटिवेटेड, if you will discuss about the DigiTrends itself, so every single person is highly motivated, because thing is on the every single day they are dealing with a very challenging project altogether. Or if you talk about the retention rate of our clients, our employees, since almost like 10 साल से कंपनी ऑपरेट कर रही है, जो कि एक छोटे कमरे से स्टार्ट हुई थी और आज अल्हम्दुलिल्लाह वी आर 130 पीपल अक्रॉस द ग्लोब। uh, I if I remember that only like few people, those who are left us because they got a very big opportunity or they have left the country. Otherwise, everyone who has joined us in the initial phases, they are intact with us at the moment, and we are growing massively. और हमारा जो recruitment hiring का जो process है वो यही है कि we bet on the new talent। और जो हमारे पास अगर आप एज ग्रुप को भी अगर आप देखें तो हमारे पास जो है एज ग्रुप जो है 20 समथिंग है, लाइक 20 से लेकर 32 33 के बहुत यंगस्टर्स है जो हमारे साथ काम कर रहे हैं, बहुत यंग एज से काम कर रहे हैं। और हमारा रिक्रूटमेंट ड्राइव भी इसी तरह से होती है कि वी गो इनटू यूनिवर्सिटीज एंड वी गो इनटू डिजाइन स्कूल्स एंड वी हायर द स्टूडेंट्स फ्रॉम देयर एंड देन वी गॉट ट्रेन्ड एंड देन वी गिव देम द जॉब। उसके अलावा जो मोटिवेशन का जो है वी डू लॉट ऑफ एक्टिविटीज। उसके अलावा हमारी वर्कशॉप्स बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होती है और एवरी सिंगल टाइम
हमारा जो इंजीनियर टू द प्रोडक्ट स्ट्रेटेजीज, प्रोजेक्ट मैनेजर, अकाउंट मैनेजर्स, जितनी हमारी एसोसिएट, दे आर डीलिंग डायरेक्टली विद द क्लाइंट्स एंड अ वेरी डिफरेंट माइंडसेट, एवरी क्लाइंट हैव देयर माइंडसेट। राइट, वहां से जो एजुकेशन और जो उनकी अपब्रिंगिंग होती है, वो उसको जो है हमारी कंपनी के मॉडल के अंदर भी हम उसको जो है ना इन्फिल्ट्रेट करने की कोशिश करते हैं। तो द टीम इज entirely motivated, and the good thing is that our majority of the team, I am the like the CMO and the director of the company. इसके अलावा we are the very when we started the business we are too young. अब तो खैर हमारी उम्र काफी हो गई है. I'm 36 at the moment. But जो हमारे पास अगर आप employee की average age देखें तो that is like 32. राइट। सो Because यंग, जब वो हमारे, yeah, very young crowd. राइट। Alhamdulillah. So that's great. अगर आप motivated, I think that's key to the success of a business, if you can keep your employees motivated. So Absolutely. दैट्स गुड टू नो। एंड अच्छा सर, ये बताएं कि आप जिस तरह आप एक बिजनेस शुरू करते हैं, उसके लिए आपको इनिशियली कुछ रिसोर्सेज चाहिए होते हैं, कुछ कैपिटल चाहिए होता है, तो आपने कहाँ से गैदर किया था वो? देखिए, फॉर्चुनेटली दिस इज माय फोर्थ वेंचर ऑफ माय करियर. हम्म, एंड उससे पहले जो हमने पहला वेंचर स्टार्ट किया था प्रिंट ऑनलाइन, बैक इन दुबई, मैंने दुबई में वो बिजनेस किया था. राइट, तो वी स्टार्टेड विद द $500 कैपिटल के साथ स्टार्ट किया था. एंड अल्हम्दुलिल्लाह व्हेन आई सोल्ड दिस बिजनेस टू 1.2 मिलियन की जो है एक्विजिशन उसकी हुई थी. जो हमारा सेकंड बिजनेस था, वी स्टार्टेड विद अनदर, हमने उसको जो है स्टार्ट किया, दैट इज अ पीआर एजेंसी. वी स्टार्टेड SaaS based PR agency, very minimal budgets. So whatever the businesses we started or I started is the self funded and the bootstrap राइट, businesses. And fortunate enough, till the date we never raised any funding for any of our businesses. Like abhi jo hai, like I have invested in a lot of startups, alhamdulillah, but all of the startups on which I'm working on are all the bootstraps, and we are not going for any fundraise or anything. And fortunately, things are moving forward. और हमें शायद आगे भी जरूरत नहीं पड़ेगी. तो जो फंडिंग का होता है, we I do. And regarding the DigiTrends, it's a very story to share with you. We've started this business with a zero investment. ओके, I took the call. I keep calling to the clients. ठीक है ना, मेरे जो पार्टनर हैं उन्होंने डोर टू डोर जाके जो है सेल्स करना शुरू किया था. और जो हमारे CTO है जो कि टेक्नोलॉजी देखते हैं, तो वो हमारे पास उसकी प्रोडक्शन को देखते थे अलोन. तो हम 3 लोग थे जो कि इससे काम शुरू करते. आज अल्हम्दुलिल्लाह हम 30 लोग हैं, 130 लोग हैं. mashallah. So I think it always starts with a small amount of people, and then it grows over time with consistency. Absolutely. So coming towards consistency and other such tips, आप क्या ऐसी tips देना चाहेंगे हमारे young aspiring entrepreneurs को, जो हमें देख रहे हैं, जो आपकी इंडस्ट्री में स्पेसिफिकली बिजनेस सेटअप करना चाह रहे हैं, उनको क्या आप एडवाइस देंगे? देखें, एडवाइस तो बस ये है कि अगेन कंसिस्टेंसी, और जो है बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले कन्विक्शन चाहिए होती है. लाइक यू हैव टू बी कन्विक्टेड. आपको कन्विक्शन चाहिए कि वी हैव टू डू द बिजनेस. और बिजनेस के अंदर अप्स एंड डाउन इज ऑलवेज कम्स. हमारे बिजनेस के अंदर अप्स एंड डाउन आते हैं. और बिजनेस के अंदर जो ना महीने अच्छे बुरे नहीं होते, ना क्वार्टर्स अच्छे बुरे होते हैं. बिजनेस के अंदर जो है फ्लो आता है, कभी अच्छा फ्लो होता है, कभी बैड फ्लो होता है. वी हैव टू, अभी जैसे वी आर प्लानिंग, बिकॉज यूनाइटेड स्टेट्स इज अंडरगोइंग थ्रू आउट द रिसेशन फेज ऑल टुगेदर. अभी इसकी हम प्लानिंग कर रहे हैं. वी हैव द कंप्लीट प्लान्स. मैंने जो है पूरी हमने स्ट्रैटेजी अपनी बनाई है कि हम अगर रिसेशन में जाते हैं, खुदा ना खास्ता, अल्लाह ना करे, रिसेशन की तरफ जाता है यूनाइटेड स्टेट्स, क्योंकि अगेन अगर यूनाइटेड स्टेट्स रिसेशन में आता है तो पूरी दुनिया के ऊपर उसका इम्पैक्ट आता है. तो हम उसको पूरा प्लान कर रहे हैं. ठीक है ना, प्लान इस तरह से कर रहे हैं कि हमें 0% डाउन साइजिंग के साथ अपने एम्प्लॉय रिटेंशन के साथ काम करना है, और हमें अपने मार्केटिंग बजट्स को जो है एग्जॉस्ट करके रखना है, और किस तरह से हम लोग इसको प्लान करेंगे. तो एवरीथिंग इज प्लान. जिस तरह से अगर मैं आपसे बात करूं, तो जब हम कोविड के अंदर गए थे, अनफॉर्चुनेटली पूरी सिचुएशन, हर बिजनेसेस बंद हो रहे थे. और हमने, अगर मैं आपको बताऊं कि कोविड के अंदर अपने पूरे टेन्योर का सबसे ज्यादा बिजनेस किया. अच्छा, तो उसके हमने उसके अंदर अपॉर्चुनिटी फाइंड की थी कि वी वर अ कस्टम डेवलपमेंट कंपनी. वी फाउंड अपॉर्चुनिटी कि अभी इस वक्त जो है हेल्थ केयर सेगमेंट के अंदर सबसे ज्यादा काम हो रहा होगा. वी स्टार्टेड डिस्कसिंग विद द हेल्थ केयर कंपनी. दैट इज व्हाई वी हैव कम अप विद दिस हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स व्हिच वी डू हैव. और ये तमाम प्रोडक्ट, जिसने टेली हेल्थ की जितनी हमारे पे एप्लीकेशन और लाइक टेली मेडिसिन की एप्लीकेशन हमने बनाई है, ये हमने ड्यूरिंग कोविड ही बनाई है. सही, और जो है ड्यूरिंग कोविड बना के हमने जो है अपने क्लाइंट्स को पिच किया. और अल्हम्दुलिल्लाह वी हैव सक्सेसफुली इम्प्लीमेंटेड दैट एप्लीकेशन टू लाइक 5 to 6 कंपनीज ऑल टुगेदर. तो मैं अगेन वही टिप दूंगा कि कंसिस्टेंसी,
and conviction onto the business, and ups and downs always comes. You have to plan accordingly. और आपके you never need like high funding. जिस तरह आज का जो दौर है, अगर आप डिस्कस आपकी भी प्लेटफॉर्म के, अगर मैं देखता हूँ स्टार्टअप इनसाइडर के हर रोज एक न्यूज आ रही होती है, फला कंपनी हैज रेज्ड दिस मच ऑफ अमाउंट इन दिस, बट हमने जब बिजनेस स्टार्ट किया, आज हम $1 million कंपनी अल्हम्दुलिल्लाह, बट within that short span of period, and we deal with the B2B business, like हम B2C पे नहीं है, हम B2B के ऊपर है. We deal with the healthcare pharmaceutical companies or healthcare institutions, hospitals, clinics and all. तो इसमें अपॉर्चुनिटीज ही हमने तलाश की थी कि हम कोविड के ना जब गए तो हम सब परेशान हो गए थे, कस्टम काम तो नहीं आने वाला बैंक से, फिनटेक से, फाइनेंशियल सेक्टर से. तो हमने फाइंड किया कि हम एडटेक, जहाँ पे एजुकेशन टेक्नोलॉजी के ऊपर और हेल्थ टेक्नोलॉजी के ऊपर हम काम कर सकते. तो हमने इन दोनों कंबाइन किया. वी स्टार्टेड पिचिंग देम एंड फॉर्चुनेटली वी गॉट द बिजनेस. जब हम कोविड से बाहर निकले, हम 2021 के एंड में आने लगे, तो देन वी फाइंड अपॉर्चुनिटी कि नाउ वी हैव टू गो इनटू स्टार्टअप, बिकॉज के स्टार्टअप बूम आ गया था, लोग पैसे वापस आ गए थे, जिन लोगों ने पैसे बचा के रखे थे, नाउ दे वांटेड टू डू द बिजनेस. तो देन वी स्टार्टेड infiltrating into that market. फिर हमने स्टार्टअप कर दिया, अल्हम्दुलिल्लाह हम वहाँ पे भी सक्सेसफुल हुए. or between the short span of 6 months, in the last 6 months, we win like incredible projects. ठीक है ना, जो स्टार्टअप्स के अंदर डील करें, इसके अंदर हमने एक बहुत बड़ा मल्टी-मिलियन प्रोजेक्ट NFT मार्केट प्लेस विच इज कॉल्ड कैसल NFT एक इंशाल्लाह लॉन्च करने की सिचुएशन के अंदर है, विच इज मल्टी-मिलियन, जो कि अपनी सीड राउंड फंडिंग के अंदर ये लोग ऑलमोस्ट लाइक $50 million रेज कर चुका है. तो हम उस जैसे स्टार्टअप के साथ भी काम करें, क्योंकि हमने अपॉर्चुनिटी तलाश की और हम प्रॉपर टाइम के ऊपर प्रॉपर जगह पे हम गए और प्रॉपर अप्रोच के साथ हमने प्रॉपर लोगों को जो है रीच किया, एंड वी गॉट द प्रोजेक्ट्स इन. That's amazing. So I think we learned a lot from your business today and your journey overall. Thank you so much for joining, and to everyone watching, thank you for watching. If you want to sign up for Founder Stories, आप next time sign up करना चाहते हैं तो आप startupinsider.info पे जाके कर सकते हैं. अगली दफा के लिए take care. Allah Hafiz. Absolutely. Allah Hafiz.